Do not start UPSC 2027 without a plan. बिकॉज आई टेल यू, जब कोई अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करता है वो सबसे पहले सोशल मीडिया अनइंस्टॉल करता है, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, वेदर इट्स अदर सच सोशल मीडिया ऐप, दे अनइंस्टॉल इट. वो टॉपर स्ट्रैटेजी सुन के बुकलेस बना लेते हैं. ओल्ड राजेंद्र नगर जाके सारे एनसीईआरटीज और भी जो भी बेसिक बुक्स होते हैं वो ले आते हैं और स्टडी टेबल की साफ सफाई करके या लाइब्रेरी में पढ़ाई करना दे स्टार्ट विद इट. आई नो ये फीलिंग, जब आपको लगता है कि बस 1 साल पढ़ना है, 1 ही साल तो रूटीन फॉलो करना है, बस साल भर ही तो टेस्ट देने हैं, आप बहुत डेडिकेटेड होके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तब किसी के मन में ये नहीं आता कि मे बी 1 अटेम्प्ट से ज्यादा लग सकता है. बहुत थोड़े ज्यादा साल इस चीज को लेके चलना पड़ सकता है, लेकिन लगता है बस मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी. फिर भी दिस इज अ हार्श रियलिटी कि लोगों के 3-4 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं और प्रीलिम्स भी क्लियर करना बहुत मुश्किल लगने लगता है. यू नो व्हाई? ऐसा नहीं है कि उनकी सीरियसनेस कम थी या दे फेल्ड बिकॉज दे वर नॉट सीरियस, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड. दे वर एक्चुअली प्रिपेयर्ड, बट द थिंग वाज दैट दे स्टार्टेड their प्रिपरेशन विद सम confusion. The moment when someone's decide to prepare for UPSC, उसके मन में बहुत सारे questions आते हैं, लेकिन वो उन questions को side करके सीधा पढ़ने बैठ जाते हैं. They don't ponder upon the questions that comes into their mind. The truth is that UPSC is not just a test of knowledge now. It is a test of planning. आपको एग्जाम का पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, उसके साथ इवॉल्व होना पड़ेगा. The earlier you get that clarity, the better your chances of success. And that is exactly why we are conducting a free live webinar on 11 months of strategy for UPSC CSE 2027. Because it's June now, mid of the June में आपका webinar होगा, तो almost 11 months का strategy आपको दिया जाएगा. And this webinar is specially designed for the beginners who are planning to start the preparation and also for those who are working people, working professionals. In this webinar, Santosh Sir, he will be discussing how you begin your UPSC preparation from zero because you're just beginning. Also, monthly targets and some revision framework. How you're going to divide the next 11 months of your preparation very effectively. How you're going to balance your static subjects, your optional subject and the current affairs. Because इस बार paper में current affairs का weightage भी काफी ज़्यादा था. So the objective of this webinar, it is very simple. It is to help you replace the confusion with clarity. Once you know how to prepare, the whole preparation, it becomes much more focused and productive. So if UPSC CSE 2027 is your target, don't spend the next few months just figuring things out on your own. Start with the roadmap under the guidance of a mentor. So join us for the free live webinar with Santosh Sir on 11th of June 2026 at 5 p.m. Register now and take the first step towards your structured UPSC journey. Because if you want to attempt for 2027, you need to have a guided program with you.